Is my screen visible to everyone? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रही है। Now मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? सर आवाज इसमें- क्लियर है पर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं अभी सर, स्क्रीन दिख रही सर वो शोभित खंडारे Yes. प्रेजेंटेशन करके आया है मीट में अभी, है? लेकिन क्या उसमें बोले भी सिर्फ आपने? आपका डीपी दिख रहा है। ये प्रेजेंटेशन करके आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। उसमें सिर्फ आपका डीपी दिख रहा है सर, प्रेजेंटेशन वाले में। सर नेटवर्क इशू, वेट। ठीक है सर। Oh, okay, shall we start now? My voice is clear as well as screen is also visible. Am I right? यस सर, अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। Okay, now we will start with the the fresh topic. Now see, we have done with the module number 1. Okay, now the what is a microcomputer, what are the differences, okay, and we have seen some of the terms used, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। you know, the based Sir, upon your the voice memory is organ. breaking. अच्छा अच्छा, एक मिनट। ब्रेक हो रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है अभी मेरी? यस सर, आ रही है सर, आवाज क्लियर है। क्लियर, अभी क्लियर आवाज है ना? यस सर। Okay, so as I have told you, we will be starting with the third module is
Microcontroller 8051. So this is your module. Okay, and the second module we will take afterwards. The second module is related with the memory. So memory portion का हम बाद में लेंगे. We will start with the fresh module, that is module 3 with the microcontroller 8051. Okay, so in my module 1 we have seen the difference between the classification of microcontroller based upon the set. So based upon the memory organization, we have seen Harvard and von Neumann architecture, as well as based upon the instruction set, we have seen यस, अभी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, और ब्रेक आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना मेरी? क्लियर है? Yes, sir. मेरी स्क्रीन भी दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. I hope this will be continuing. This will be fine. So I was talking about the third module. As I have told you in module number 1, I have covered the microprocessor, microcontroller in general, and we have also seen some of the classification of microcontroller based upon memory organization, as well as depending upon the type of instruction set. So
depending upon this memory organization, we have seen von Neumann architecture as well as Harvard architecture. And as per the basis upon the instruction set, we have seen CISC and the RISC. So when you talk about this microcontroller 8051, during the explanation of this particular von Neumann and Harvard, I have told you that 8051 will follow which particular type of architecture. Can anyone of you tell me 8051 follows which architecture? It is von Neumann or Harvard? Harvard. Yes, Harvard. it follows the Harvard architecture. It follows the Harvard architecture. It means that your program memory as well as your data memory are separate. And to access both these memories, you have different, you have separate data bus, you have separate address bus, you have separate control bus. And the advantage of being such type of architecture is that the accessing time will be reduced, because simultaneously we can access data memory as well as program memory. Now, in terms of your RISC or CISC, your 8051 follows which one? CISC. Yes, CISC. Your 8051 follows CISC, that is complex instruction set computer. Now we will see, now today we'll be starting with the microcontroller 8051. We need to understand the features of 8051. We need to understand the block diagram of 8051. We should understand the pin configuration of 8051. We should understand the memory organization of 8051. Okay. So we will be starting our discussion with the microcontroller 8051 and its feature. So features are very important. Once we understand the features, then we can proceed to understand the block diagram. Okay. So I'll be sharing my PPT so that you will be able to see this, and we will start with the features. We'll be starting with the feature. Is my slide visible to everyone? Yes. Yes, sir. Oh, okay. Yes, the specific features. I want everyone to listen to the explanation. Side by side, you can write down the features also in your notebook. Okay, I'll be explaining each and every feature. All the features are very important. Now, the first question, if someone asks you, आपका 8051 microcontroller कितने bit का controller है? Your answer should be, it is an 8-bit. It is an 8-bit microcontroller. So when you talk about the 8-bit microcontroller, what does it simplifies or signifies? What does it signifies? Can anyone of you tell me? मैंने ये आपको बताया 8-bit, 16-bit, 32-bit in terms of processor. The same thing applies for microcontroller also. So if I say 8-bit of 8051 is 8-bit of microcontroller, what is the significance of this? What is the significance of this? Yes? I have already explained you this 8-bit, 16-bit processor. I have given an explanation. आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें कितने बिट का प्रोसेसर है? You told me sir 32 बिट का है. So I have told you some laptops has 32 bit of processor, some has 16 bit. So in terms of that, the processing speed will be more in 32 bit as compared with the 16 bit. So what do you mean by 8 bit? Am I audible? Yes, sir. So no one has the answer for this. 8 bit. 8-bit का data. ALU is 8-bit. Yes, ALU is of 8 bit. या फिर आप ऐसा बोलो, your ALU can process 8 bit of data simultaneously or in a single cycle. Okay, so you should say your microcontroller can process 8 bit of data in ALU in a single clock pulse. In a single clock pulse. Okay, I have told you all the operations in the microcontroller or microprocessor is in the synchronization of the clock pulse. Is in the synchronization of the clock pulse. So आपके ALU में जो भी कुछ operation आता है, so at a time it can process 8 bit of data. It can process 8 bit of data. Okay,
it can process 8 bit of data. And to process this 8 bit of data, we have two registers in 8051. They are A register and B register. I have told you a register is what? It is the temporary storage of the data, as well as it is used to store the result also. So in your 805, you have two registers. You have two registers, A register and B register. Okay. What is the size of A register? 8 bit. What is the size of B register? It is also 8 bit. So for example, I have to add two 8 bit of data. If I have to add two 8 bit of data, can I take one 8 bit in A register and the second 8 bit in the B register? So see here, A register, suppose I am taking 8 bit of data. Suppose the bits are 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. And the second register B, it is all the size of it B register is also 8 bit. And if the data is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So A register 8 bit, B register 8 bit, and processing is happening in the CPU, to be more specific, ALU. So two 8 bit of data are getting added in the ALU. Two 8 bit of data is getting added in the ALU, and the result of this addition will be stored in A register again. यानी A register में मैंने ये 8 bit लिया, B register में मैंने 8 bit लिया, दोनों को ऐड किया. ऐड होने के बाद A register will have the result. That means ये जो आपको दिख रहा है 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, that will be overwritten by the result of the addition of A register plus B register. So the result will be added, the result will be stored in the A register. So what is there in the A register previously, that is overwritten by the result. I hope you have understood this. I hope you have understood this. और एक बार समझाओ ना सर. हाँ, मैं बताता हूँ. Suppose I take an example where you have to add two 8 bits of data. Two 8 bit of data. If you are to add two 8 bit of data, one bit is suppose 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Can you say this is 8 bit? Can you say this is 8 bit? Yes sir. Yes. Yes, sir. And the second data is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Can I say this is also 8 bit of data? Yes. So I want to add this plus this. I want to add this plus this. So first what we will do, you will take, now can I say this as operand 1? Now this is called as operand 1 and this is called as operand 2. So operand 1 is stored in register A, which is of 8 bit, and the second operand is stored in the next register, which is called as B register. दोनों का साइज है 8 बिट का, तो A में जाएगा ये, B में जाएगा ये. So for that we have a special instructions, okay, to store this in A register and to store this in B register. Once we store that, then we have a special instruction to add these numbers, 8 bit numbers. And when we add these two 8 bit numbers, the result which will be generated, for example, यहाँ पे result क्या आएगा? 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 0 plus 0, 0, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. So this carry will be discarded, and this result, this is also 8 bit, this is also 8 bit. So this result will be overwritten in A register. This will happen by default. This will happen by default. This will happen by default. So here, to carry out such type of operations, we have to take two 8 bit of number in B register and other in A register, and the result will be stored in A register. So this A register by default will have the result. It can be addition, it can be subtraction, it can be multiplication, it can be division.
So whatever the operation you do, the result will be by default stored in A. So this A is called as accumulator. A is called as accumulator. A is called as accumulator. Okay. So this is the first feature, that your 8-bit CPU, 8051 is of 8-bit CPU. That means the ALU will perform 8-bit of operation simultaneously in a single clock pulse using two registers, register A and register B, because one operand will be stored in A and the other operand will be stored in B. And after we do the operation, the result will be stored into the register A. So register A is also called as accumulator. Register A is also called as accumulator. Any question in this so far? Any question so far? Any question? अगर नहीं समझा तो I'll be happy to explain you once again. No problem. But have you understood the concept of 8-bit CPU with registers A and B? And the size of register is 8-bit for register A, and size of B register is also 8-bit. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now the next feature. See the next feature. It is a 16-bit PC and DPTR, data pointer. Okay. Now this is an important feature. It has a 16-bit PC. PC stands for program counter. PC stands for program counter. PC stands for program counter. While explaining you the block diagram of CPU, I have explained you there was one block that is called as a program counter. Can any one of you tell me what is a program counter? Can any one of you tell me what is a program counter? Can any one of you tell me what is a program counter? Shows the address of the instruction to be executed. Yes. So it stores the address of the next instruction to be executed. Very good. Very good. So your program counter will hold the address of the next instruction which has to be executed. Which will hold the address which has to be executed. Okay. Now, when you talk about this program counter, the size of program counter is of 16-bit. The size is of 16-bit. The size is of 16-bit. Okay. And DPTR, data pointer. अभी ये सब चीजें होती है ना, प्रोग्राम काउंटर, ये सब आपके सीपीयू में होती है. डेटा पॉइंटर भी आपके सीपीयू में होता है. तो डेटा पॉइंटर का भी साइज 16-बिट है. तो पीसी का सिग्निफिकेंस आपको पता है कि इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके. So for data pointer, this thing I will explain you after I explain you the memory organization. Okay. So for time being, you have to just remember that program counter size 16-bit, DPTR, which is called as a data pointer, DP stands for DPTR stands for data pointer. The size of data pointer is also 16-bit. Okay. तो आपको एक पता चला कि रजिस्टर ए की साइज 8-बिट, रजिस्टर बी की साइज 8-बिट, प्रोग्राम काउंटर 16-बिट और डीपीटीआर 16-बिट. ओके. तो डेटा पॉइंटर मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओके. सो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स. ओके. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ 8051 microcontroller. The next feature, it has an 8-bit program status word. It has an 8-bit program status word. This is also important. Program status word. So what do you mean by program status word? Program status word, उसका दूसरा नाम होता है flag. I want everyone to listen. This is important. Today's lecture is very important. So when you talk about the flag or PSW, that is a program status word. Okay, I will give a small example. ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं. When you do addition of two 8-bit number, you will get suppose some answer 1011011111.
ये 8 बिट का है क्या? 1 2 3 4 5 6, यस 8 बिट का। ओके, नाउ ये आपका रिजल्ट है। इफ आई आस्क यू वेदर दिस इज अ इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, व्हाट इज योर आंसर? जिसको पता है वो बताए, नहीं पता है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस। ये रिजल्ट है, और रिजल्ट जो आपके सामने दिख रहा है वो 8 बिट का है। और मैंने आपको पूछा है कि ये रिजल्ट जो दिख रहा है आपको, ये इवन पैरिटी बता रहा है कि ऑड पैरिटी बता रहा है? व्हाट इज योर Even. Even. even? Okay, how you can say it is even? 6 ones. Very good. So you say the result is gives you even parity. It means the number of ones are 6, and 6 is an even number. If number of ones are suppose for example if 5 are the number of ones, then we will say odd parity. ये जो इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी है ना, एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर का नाम है PSW, दूसरा नाम है उसका फ्लैग। कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बिट का है? 8 बिट का। 8 बिट दिखा रहा है, मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का होता है। तो ये जो 8 बिट का जो आपका रजिस्टर है ना, which is called as a program status word, that will reflect some of the features of the result. एक मैंने फीचर बताया रिजल्ट का, ये आपका जो रिजल्ट है वो इवन पैरिटी का है। तो ये जो इसमें जो बिट्स है ना, PSW में 8 बिट है ना, इसमें एक बिट है दैट इज डेडिकेटेड फॉर पैरिटी। इसका मतलब है सी हियर, अगर रिजल्ट आपका इवन पैरिटी है तो ये जो बिट है ना यहाँ पे वो 1 दिखाएगा। अगर ये आपका रिजल्ट ऑड पैरिटी है तो यहाँ पे आपका 0 दिखाएगा। सो कैन आई से दिस पर्टिकुलर बिट विल रिफ्लेक्ट whether the result is even parity or odd parity. If the result gives you even parity, then this bit will be 1. And if this bit gives you 0, that means the result generated shows odd parity. Such different you have total 8 bits. Such you have total 8 bits. Such you have total 8 bits. उसमें से मैंने एक ही आपको पढ़ाया, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले PSW. So just I have to tell you one important thing, that PSW is a program status word which shows you the status of the result. I have just given you one example. If the result shows even parity, 1 will be reflected here, and if the result is odd parity, 0 will be reflected here. 0 will be reflected here. 0 will be reflected here. मैं एक सेकंड एग्जांपल भी देता हूं। अगर आपका रिजल्ट 0 0 0 0 0 0 0 0, ये पूरा 0 आ गया, तो इसमें एक बीट होता है वो 0, उसको बोलते हैं 0 फ्लैग। ये बिट को क्या बोलते हैं? पैरिटी फ्लैग, विच विल रिफ्लेक्ट वेदर इट इज इवन और ऑड। वैसा एक बिट होता है जिसको बोलते हैं 0 फ्लैग। अगर आपका रिजल्ट 0 है तो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय 1। अगर आपका रिजल्ट नॉन जीरो है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय 0. सो कैन आई से 1 रिफ्लेक्ट्स 0, रिजल्ट इज 0, एंड 0 रिफ्लेक्ट्स नॉन जीरो। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दिए, तो जब मैं PSW डिटेल में लूंगा, देन आई हैव टू एक्सप्लेन यू ईच सिग्निफिकेंस ऑफ ईच बिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच बिट। यहां तक किसी को डाउट है? Please do not proceed unless and until you are satisfied with the explanation, you understand each and every concept. अगर यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएगी। Do you understand what is the PSW and what is the size of PSW? 8 bit. It is also called as a flag. It is also called as a flag. Have you understood this concept? Yes, sir. Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. If you do not ask me question, I am assuming that you understood. Okay. You can stop me anytime.
पिछला भी अगर कुछ समझ में नहीं, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Do not keep the questions for the last moment. So we have seen 3 features. Next feature, it has a 8-bit stack pointer. It has a 8-bit stack pointer. So ये stack point 8-bit. So just time being, you understand that there is one more register which is called as a stack pointer, and the size of this is also 8. The size of this is also 8. Stack pointer हम अलग से लेने वाले हैं when I will be explaining you subroutine. When I will explain you subroutine. Okay? जब मैं आपको subroutine पढ़ाऊंगा, that time I will be explaining you what is a stack pointer. Okay? So for time being, you have to just understand that it is a stack pointer is a register which will, what is the size of that? It is of 8-bit. Which is the size is of 8-bit. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yes. So we have seen, am I audible? Yes, sir. Okay. So we have seen the 8 features of 8051. We are proceeding to the next feature. Yes, these are important now. These are important. और ये हमको डिटेल में बाद में भी लेना है. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. So you have this microcontroller 8051. You have this 8051 microcontroller. So in general, microcontroller will have microcomputer on a chip. Microcomputer on a chip. That means everything is on a chip. Your RAM, your ROM, your IO port, your timer, everything is on a chip. So on a chip means you have RAM as well as on a chip you have ROM. तो ये जो 8051 है, इसके अंदर सब चीजें. तो इसमें से अगर मैं एक चीज निकालता हूं या फिर आपको दिखाता हूं, तो यू हैव टू सी ROM और दूसरी यू हैव टू सी RAM. So you should know what is the size of ROM in 8051 and what is the size of RAM in 8051. So internal ROM, देखो internal ROM दिखा है. So I will be giving you the meaning of internal ROM and external ROM. So as far as 8051 is concerned, the internal ROM size is of 4K. 4 kilobyte. 4 kilobyte is the size of ROM. And as far as internal RAM is concerned, the size is of 128 bytes. 128 bytes. The size is of 128 bytes. There is one more feature which is not here. I will just write down. The address bus is of 16
16 bit address bus is of 16 bit. Address bus is of 16 bit. Now, as far as 8051 is concerned, you know that internal ROM size is 4K and internal RAM size is of 128 byte. ओके, तो इंटरनल रोम तो फिक्स्ड है, इंटरनल रोम तो फिक्स है, इंटरनल रैम भी फिक्स्ड है. ओके, वी कैन नॉट चेंज. लेकिन अगर हमको रोम बढ़ाना है या फिर हमको रैम बढ़ाना है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी if the address bus is of 16 bit, it is of 16 bit, एक्सटर्नल मैं रोम कितने का लगा सकता हूं और एक्सटर्नल रैम मैं कितने का लगा सकता हूं? एनीवन? ये भी आपको पता है. अगर एड्रेस बस, आपको पता है एड्रेस बस मैंने आपको पढ़ाया था, सिस्टम बस में 3 बसेस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस. एड्रेस बस अगर आपका 16 बिट का है तो अगर मुझे एक्सटर्नल रैम को लगाना है अलग से और एक्सटर्नल रोम को लगाना है, तो एक्सटर्नल रोम में कितने साइज का मैक्सिमम लगा सकता हूं और एक्सटर्नल रैम रोम में मैक्सिमम कितने साइज का लगा सकता हूं? एनीवन? एनीवन? 65536. Okay, have you got that? 2:16. Very good. 2:16 is equals to, yes, 65536. 65536. 65536. It is byte or beats or kilobyte or what? What is the unit? Bytes. Yes, it is bytes. It is bytes. So if I'm having 16 address line, I can address 65536 locations. I can address 65536 locations. Okay, तो इसका मतलब है अगर मैं, ये आपका 8051 है, ये आपका 8051 है, इसका इंटरनल रैम फिक्स है, इंटरनल रोम फिक्स है, दैट इज 4K, और इंटरनल रैम फिक्स है, दैट इज 256. हाउ मच? कितना था साइज? 128. हाँ, 128. सॉरी, दिस इज 128. yes, 128 bytes. So can I say on chip ROM is equals to 4K and on chip RAM is equals to 128 bytes? Yes or no? 128 bytes, yes or no? On chip? Yes, Yes, or sir. no? Yes. 128 bytes. Now here with the 16 bit of address, we can access, as you have told me, 65536. Okay, so that much of memory I can access externally. That much of memory I can access externally. So external memory अगर मुझे लगानी है तो that provision also I have. I can externally connect those. मैं उसको अलग से लगा सकता हूँ. ओके, तो अलग से लगाने के लिए जो एक्सटर्नल रैम और रोम रहेंगी उसका साइज आपको फिक्स पता है, दैट इज 65536 बाइट्स. तो एक्सटर्नल रैम और रोम हम बाद में पढ़ेंगे. वी हैव जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फीचर ऑफ 8051. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन चिप ROM is 4K and on chip RAM is 128 bytes. Okay, so these are the two additional features we have studied now. Any question? Any question about the on chip RAM and on chip ROM and about No. the address? Okay, we will proceed now. We will see the next one, next features. Yes. Now here 4 register banks, each having 8 registers and 16 bytes, which may be addressed at the bit level. Okay, अब these two things we will study when I will be talking about the memory organization of 805. तो उसमें हम एक्चुअली देखने वाले आपका 8051 का मेमोरी कैसा है. Okay, so for time being, just understand
that it has a 4 register banks. It has a 4 register bank, each having 8 registers. ओके, तो 4 रजिस्टर बैंक है, 1 2 3 और 4. दिस इज बैंक 0, this is bank 1, this is bank 2, this is bank 3, and each bank has 8 registers. 8 registers बोले तो एक रजिस्टर 8 बिट का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 रजिस्टर्स है. और एक रजिस्टर का साइज कितना है? 8 रजिस्टर ऑफ 8 बिट ईच. यानी ये देखो, ये इतना साइज दिख रहा है. ये रजिस्टर सपोज 0 है, ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर लास्ट वाला रजिस्टर 7. तो टोटल रजिस्टर कितने हैं? टोटल रजिस्टर 8 है. और हर एक क्या रजिस्टर का साइज कितना है? 8 बिट. 8 बिट. कोई मुझे बता सकता है टोटल साइज कितना है रजिस्टर बैंक 0 का? टोटल साइज कितना है रजिस्टर सॉरी बैंक 0 का, जिसमें 8 रजिस्टर है और एक रजिस्टर का साइज 8 बिट है. तो साइज बता सकते हो बैंक 0 की साइज कितनी है? 64 64 हाँ, 64. यूनिट क्या है? बिट्स. बिट्स. यस, 64 बिट्स. 64 बिट्स. अगर बिट्स नहीं बोलना है मुझे, बाइट्स बोलना है, तो कितना बोलूंगा? अगर बिट्स नहीं बोल अगर मुझे बिट्स नहीं बोलना है, बाइट्स बोलना है, तो कितना बोलूंगा? 8 बिट्स. 8 बाइट्स. वेरी गुड. 8 बाइट्स, या फिर यू विल से 64 bits. या फिर यू विल से 64 bits. सो बैंक 0 8 बाइट या फिर 64 बिट्स, बैंक 1 8 बाइट या 64 बिट्स, बैंक 2 8 बाइट्स या फिर 64 बिट्स, और बैंक 3 आल्सो 8 बाइट या फिर 64 बिट्स. टोटल मुझे बता सकते हो टोटल बैंक्स 0, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये सब मिला के कितना साइज कंज्यूम हो गया, या फिर कितने साइज का हो गया टोटल? 32 byte. 32 bytes. Very good. 8 fours are 32. 8 fours are 32 bytes. Very good. 8 fours are 32 bytes. Okay. So आपको ये पता चला. This thing we will see when I'll be talking about memory organization. क्या लिखा है यहाँ पे? 16 bytes which may be addressed at the bit level. Okay. तो ये सब हम बाद में देखेंगे. So we have seen the features. There are again more features are there. There are more again features are there. The last one is 80 bytes of general purpose data memory. Okay, 8 bytes of general purpose memory. So this also you just hold on. Okay. Okay. Now ये जो बाकी के जो फीचर्स है यहाँ पे आपको बताने से अच्छा आई विल बी डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग यू व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट. एक मिनट. हेलो. So this particular features I'll be explaining you when I'll be talking about the block diagram of 8051. Okay, so here we'll be seeing the block diagram. Here we'll be talking about the block diagram.
Yes. Can you see this block diagram of 8051? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Ah, sir. yes. Now I'm going to summarize the features by the block diagram. Actually, when the question is asked in the exam to explain the block diagram, actually there are, two block diagrams are there. This is the simplest one. And the other block diagram, which is the detailed block diagram, which is nothing but the elaboration of this block diagram. Okay. So that elaborative block diagram is not so important. Okay. Because उसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है. Okay, depending upon if, for how many marks the question is asked. But then also, if you explain this block diagram, that will also serve the purpose. Okay, now see what is there. I want everyone to pay attention. This is a block diagram of 8051. A block diagram of 8051 means what are the different components available in 8051. Okay, so what are the available features? सबसे important, ROM, RAM. Can you see ROM का साइज 4K, RAM का साइज 128? Yes, तो ये दो इंपॉर्टेंट आ गया. नेक्स्ट, उसमें 8051 में दो टाइमर होते हैं. 8051 में दो टाइमर होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. Now what is the function of a timer? Timer is used for counting. Timer is used for counting the pulses as well as to give the timing clock pulses to carry out some operation. ओके, तो टाइमर के दो फंक्शंस है. इट इज यूज एज अ टाइमिंग एज वेल एज इट इज यूज एज अ काउंटर. इट इज यूज एज अ काउंटर. ओके, अगर कुछ एक्सटर्नल इवेंट मुझे काउंट करने हैं तो दैट देन इट इज यूज फॉर अ काउंटर. अगर एक्सटर्नल इवेंट मुझे काउंट करने हैं देन इट इज यूज एज अ काउंटर. और अगर मुझे आई हैव टू गिव some I have to carry out some operation with synchronization with the time or clock pulses, then it is used as a timing. Then it is used as a timing or it is used as a clock pulses. Okay, so whenever you talk about timer, remember timer हम एक single word use करते हैं, but it is mostly associated with counter if I am counting external event, or if I am giving some clock pulses for to carry out some operation. Okay, तो टाइमर बोलते समय एक ही टाइमर बोलेंगे, लेकिन उसके दो फंक्शंस है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. इट कैन बी यूज एज अ काउंटर और इट कैन बी यूज एज ए टाइमर और टाइमिंग टू गिव द क्लॉक पल्सेस. ओके, तो ये टाइमर कितना 80 के पास 8051 के पास टाइमर कितने दो है. उनके नाम क्या है? टाइमर 0, टाइमर 1. ओके, और ये जो एरो दिखा रहा है दिस इज फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. अगर हम बाहर से अगर कुछ इवेंट को काउंट करना है सो काउंटर इनपुट इज गिवन टू द टाइमर. ओके, तो ये तीन ब्लॉक हो गए. नेक्स्ट ब्लॉक, सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज UART, यूनिवर्सल असynchronous रिसीवर एंड ट्रांसमीटर. यूनिवर्सल asynchronous receiver and transmitter. Now your 8051 will be able to transmit the data serially as well as receive the data serially. So when you transmit the data serially, it will be transferred through TXD, transmit data. And when it is receiving the data serially, it is called as RxD, received data, RxD. Okay, so you know there are two types of transmission, parallel or serial. So under the serial transmission or reception, that is done by serial port. That is done by serial port, which is also called as UART. Okay, universal asynchronous receiver and transmitter. So for that you have two different dedicated lines for transmitting TXD and for receiving RxD. Next, it has 4 IO ports. Serial communication serial port से चलेगा और parallel communication यहाँ से चलेगा. कहाँ से? IO port से. So how many IO ports are there? 4 IO ports are there. Which are they? Port 0, port 1, sorry, port 0, port 1, port 2 and port 3. Actually, हाँ ठीक है. Port 0, port 1, port 2 and port 3. Each port is of 8 bits. Each port is of 8 bits. इसका मतलब हर एक पोर्ट
can receive or transmit data, 8 bit of data simultaneously. That is why this is called as a parallel transmission. इसमें 8 bit, इसमें 8 bit, इसमें 8 bit, इसमें 8 bit. Okay, so your parallel communication is done by the IO port, which is called as a P0, P1, P2, P3. P क्यों बोला है? Because parallel transmission. Parallel क्यों है? क्योंकि पोर्ट 0 8 बिट का है, पोर्ट 1 8 बिट का है, पोर्ट 2 8 बिट का है, पोर्ट 3 8 बिट का है. तो अगर मुझे 8 बिट ट्रांसमिट करना, 8 बिट को ट्रांसमिट करना है, तो मैं ये चारों में से एक पोर्ट ले सकता हूं. और अगर दूसरे पोर्ट में से मुझे रिसीव करना है 8 बिट, तो मैं बाकी के तीनों में से एक ले सकता हूं. Okay, so here it means that parallel transmission and reception of 8-bit data can be done by these 4 ports: port 0, port 1, port 2 and port 3. यहाँ पे और एक चीज है, your address and data. आपको पता है एड्रेस कितना है? 16 बिट का है. डेटा साइज कितनी है? यस, व्हाट इज द डेटा साइज? व्हाट इज द डेटा साइज of 8051? My question is, what is the data size of 8051? 8 bit. 8 bit. 8 bit. आपका ALU क्या कितना बिट पे साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकता है? 8 बिट पे. तो आपका डेटा साइज 8 बिट होना चाहिए, तब जाके 8 बिट वहां से आएगा ना, डेटा बस से. तो योर 8 बिट इज योर डेटा बस इज ऑफ 8 बिट एंड योर एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट. सो दैट 8 बिट एंड 16 बिट can be achieved on this port P0 and P2. तो ये दोनों पोर्ट, अगर एड्रेस बस है तो पोर्ट 0 और पोर्ट 2 दोनों भी यूज करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि एड्रेस बस का साइज 16 है, P0 का साइज 8 है, P2 का साइज 8 है. 8 + 8 16. और आपका डेटा साइज क्या है? 8 बिट का है. तो 8 बिट अगर मुझे ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है थ्रू द डेटा बस, देन you can use either P0 और P2. either P0 और P2. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एड्रेस/डेटा. इसका मतलब ये भी होता है P1 और P3 एड्रेस बस और डेटा बस के लिए यूज नहीं होते. एड्रेस बस और डेटा बस के लिए अगर यूज करना है तो P0 और P2 ही करना है. एड्रेस बस के लिए करना है तो P0 और P2 दोनों को साथ में मिल के यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एड्रेस बस का साइज है 16. और अगर डेटा बस को यूज करना है तो P0 करो या फिर P2 करो, बिकॉज डेटा साइज होता है 8 बिट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. शैल वी प्रोसीड फर्दर? Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. Now comes yes, this is bus control bus. आपको कंट्रोल बस के सिग्नल कौन कौन से पता है? आपको कंट्रोल बस के सिग्नल कौन कौन से पता है? जब मैंने सिस्टम बस में एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस बताया, उसमें कंट्रोल बस के भी मैंने कुछ सिग्नल बताए थे. तो वी कैन यू जस्ट let me know which are the signals which are control signals? Yes, Read, write, memory, input, output. very good. It is RD and WR. So as far as 8051 is concerned, you have RD bar and WR bar. Both are active low. Okay. इसके अलावा भी आपके और 2 कंट्रोल बसेस होते हैं. एक का नाम होता है ALE, एड्रेस लैच अनेबल, और दूसरे का नाम होता है PSEN बार. तो ये सब हम ये बाद में लेंगे. ओके. तो आपको सिर्फ एक याद रखना है कि एक ब्लॉक होता है बस कंट्रोल का, वो बस कंट्रोल का 4 सिग्नल्स है, RD बार, WR बार. RD बार स्टैंड्स फॉर रीड, WR बार स्टैंड्स फॉर राइट. बोथ आर एक्टिव लो. उसके अलावा देयर आर 2 मोर सिग्नल्स विच आर कंट्रोल सिग्नल्स. एक सिग्नल का नाम है ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच अनेबल, और दूसरे सिग्नल का नाम है PSEN बार. ओके. तो ये बाकी के 2 हम बाद में पढ़ेंगे, बट यू नो अबाउट रीड एंड अबाउट राइट.
Okay, so we have covered how many blocks? 1 2 3 4 5 6 blocks. Okay, अब रह गया interrupt control. So with this I will stop my this one today's class. Now we have interrupt control. There are total 2 external interrupts. External interrupts means अगर बाहर से कुछ interrupt आ रहा है, अगर बाहर से कुछ इंटरप्ट आ रहा है तो बाहर के इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए यू हैव 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स. और अगर इंटरनल कुछ इंटरप्ट है वो कितने हैं? वो है 3. बाहर के 2, अंदर के 3, टोटल 5 इंटरप्ट्स. टोटल 5 इंटरप्ट्स. तो to control those interrupts we have a dedicated block which is called as a interrupt control. That is called as interrupt control. Which is the other block? CPU, जो आपको ऑलरेडी पता है. CPU के अंदर ALU बाकी के सब चीजें हैं. ओके, तो CPU के अंदर you know what are the other blocks. Okay, and the other one is oscillator. And the other one is oscillator. Okay, now oscillator is important. Oscillator is important. Can anyone of you tell me what is the function of oscillator? To produce clock pulses. Very good. To produce the clock pulse. आपके 8051 में it has the internal clock pulse. It has the internal clock pulse. So oscillator will generate that clock pulse. Your oscillator will generate those clock pulses. Okay. Now these clock pulses are which are internally generated. They are generated by the quartz. Okay, they are generated by the quartz. So when I'll be talking about the explanation of this oscillator, you have to just understand that typically 12 megahertz quartz crystal is used. तो आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है ये वाला. This is 12 megahertz. As far as 8051 is concerned, the crystal quartz will give you 12 megahertz of frequency. And that 12 megahertz is given to the CPU. Why it is given to the CPU? Because all the operations happening in the CPU or in the ALU will be in synchronization of 12 megahertz frequency. 12 megahertz of frequency बोले तो suppose ये है, ये clock pulses है. अगर मैं बोलता हूं कि ये clock pulses का frequency क्या है, तो वो कितना है? 12 मेगाहर्ट्ज. 12 मेगाहर्ट्ज. कोई मुझे बता सकता है इन कंपैरिजन विद 12 मेगाहर्ट्ज अगर मैं बोलता हूं एक दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है जिसका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 14 मेगाहर्ट्ज है, तो मुझे बताओ ऑपरेशन 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फास्ट होगा या 14 मेगाहर्ट्ज में ज्यादा होगा? 14. Anyone with a different answer? आपका 8051 will work on 12 megahertz और एक दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है सपोज XYZ, वो वर्क करता है 14 मेगाहर्ट्ज पे. मुझे बताओ एक नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो 12 मेगाहर्ट्ज में वो जल्दी होगा या 14 मेगाहर्ट्ज में जल्दी होगा? Yes, I'm waiting for the answer. I'm waiting for the answer. What is the relation between frequency and time? Inverse. Inverse. आपका F is equals to 1 by T या फिर T is equals to 1 by F. Can I say time period is nothing but T on plus T off. T on बोले तो ये on time, off बोले तो ये off time. आपका एक्चुअली ये स्क्वायर वेव है जहां पे ड्यूटी साइकिल 50% है. इसका मतलब ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेम है. ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेम है. ठीक है. अब मुझे बताओ 1/f इज इक्वल्स टू टी 1/12 मेगाहर्ट्ज या फिर 1/14 मेगाहर्ट्ज. इसमें आपका टाइम पीरियड और इसमें आपका टाइम पीरियड
दोनों में टाइम पीरियड ज्यादा किसका रहेगा? 12 megahertz. 12 मेगाहर्ट्ज। यानी आपका डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब आपका टाइम पीरियड ज्यादा है। 12 के कंपैरिजन में 14 मेगाहर्ट्ज, यानी आप 12 से आप 14 गए तो आपका टाइम पीरियड बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? बढ़ने वाला है। आपका टाइम पीरियड बढ़ने वाला है। तो आपका जब टाइम पीरियड बढ़ने वाला है, इसका मतलब ये आपका ऑन टाइम ऑफ टाइम बढ़ने वाला है। So can I say this is a clock pulse for 14 megahertz and this is a clock pulse for 12 megahertz? अब मुझे बताओ ऑपरेशन जल्दी किस में होगा? 12 megahertz. यस, 12 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि ये ऑन टाइम ऑफ टाइम पास में, यहाँ पे मैंने जानबूझ के बड़े दूर दूर बताया। यानी इतने पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑपरेशन हो जाता है। वही अगर 14 मेगाहर्ट्ज तो यहाँ से लेके यहाँ तक। सर यस सर 1/12 से जब 1/14 जाएंगे तो टी कम होगा ना? हाँ, यस 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 यस, सॉरी, ये गलत बोला आप लोगों ने। 1/12 मेगाहर्ट्ज, आप डिनोमिनेटर अगर बढ़ा रहे हो तो आपका टाइम पीरियड कम होगा ना। आप 12 से 14 गए, यानी डिनोमिनेटर आप बढ़ा रहे हो, 12 डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब टाइम पीरियड कम होगा ना। तो ये गलत हो गया ना, दैट इज रॉन्ग। इट शुड बी ये ऊपर वाला शुड बी फॉर 14 मेगाहर्ट्ज एंड नीचे वाला विल बी फॉर 12 मेगा। अब बराबर है? अब बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ, सी यार, व्हाट ही हैज सेड इज राइट। 12 से जब 14 मेगाहर्ट्ज जाते हैं, इसका मतलब आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो। डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपका टाइम पीरियड कम हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड कम दिख रहा है 14 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो ये बराबर है। और 12 मेगाहर्ट्ज के लिए ये दूर दूर चले जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड बड़ा हो गया, और यहाँ पे देखो टाइम पीरियड छोटा है। So for 14 megahertz and for 12 megahertz. So when the crystal frequency, if you increase, then the operation will be done in a lesser time. Then the operation will be done in the lesser time. वही अगर मैं 14 से 16 जाता हूं तो फिर से ये पास में आ जाते। ये हो गया 16 के लिए। अगर 18 के लिए जाता तो ये फिर से और पास में आ जाते। I hope you have understood this now. Have you understood now? Yes, sir. Okay, so we will talk more about this oscillator in the next lecture. So I think we have covered everything in this block diagram. Remaining part we will take in the next lecture. Okay, Manpreet, attendance हो गया क्या? Yes, sir. Okay, if you don't have any questions you can leave, everyone. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. okay, bye bye. Thank you, किसी sir. को डाउट है तो पूछो प्लीज।